રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ બિહારની મુલાકાતે છે. પટણા મેડિકલ કોલેજ શતાબ્દી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમારંભને સંબોધતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજનો યુગ તે ટેકનોલોજીનો યુગ છે. વિદ્યાર્થીઓને આધુનિકતા માટે તત્પર રહેવા તેમણે અનુરોધ કર્યો હતો. તેમણે કેન્સર ઉપરાંત તમામ રોગોના સંદર્ભમાં સંશોધન પર ભાર મૂક્યો હતો. विशालतम अस्पतालों में से ये एक होगा। बेबियों और स्वजनों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहे। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी।